any time, we'll start this session. Okay. So in yesterday's session, we were learned that. Let me share my screen first. Okay. In yesterday's session, we got to know how to create a repository and how to fetch the created repository. These things we got to know. Now, moving on. Like obviously, all of you are able to do such operations, create and get is for sure, it is for like all of you are understood how to create a repository and how to fetch the repository, correct? No, all of you are able to do that. Okay. Yeah, some of you are facing some different status codes like 400 and 422 that I will cover in today's class only. Yeah, it's okay, I will cover it, and why it is coming I'll tell you. Okay. Now, see, post we have created one repository and we have fetched the created repository. Now, if I want to update some things, like if I want to make it as public, like as of now, anyone can see it. Okay. Sorry, yeah, your repositories. See, it is the UI, and it is public. Anyone can see my repository which I have created. Okay, just because it is public. Now, what if I want to make it as private? So what I will do, what I will do. See, I will just go and yes, I will go. I will come here. I will add one more request. Okay, I will add one more request. And what request? Update repository. Update repository. Update repo. Okay, I have given one request name. Okay, of course, to update a repository we need one. There are two methods to update: put and patch. Let's select put. Okay, let's select post as of now. Let's select put. Okay, and for URL, obviously I have to go to API document. So how will I go? I'll scroll down till footer. I will open this API link and new tab. Okay, and then I will search for REST API. Got it? REST API, got it. Then I will click on this overview, and then I will click on this resources in the REST API. From here I can find the base URL. I will copy it and I will paste it over here. Done. Now if I want to find the endpoints where I have to go, just I'll close this overview. I will scroll down. I found one repositories. See, I'll open it. I will open repository. Now here I have to find to update a repository. What will be my endpoint? So see, delete, get, yes, see, update a repository. Okay, so I will click on this update a repository. Okay, now I found to update a repository. See, to update a repository, the method, the operation which is used is patch. Okay, here they have used patch for updation. So what I will do, I will just copy this endpoints. I will come over here. I will paste the endpoints and I will select patch method for updation, because in API document they have mentioned patch for updation. So I'll come over here. I'll select patch. Okay. Now, just like I also have to give some owner. Okay. Yes. Okay. So I will come over here. I will copy the owner name. See, I will copy it. I will come and I'll paste it here. Simple. Correct? Now same for repository. Same for repository. How will I paste? I will come over here. See what repository I had created. I had created one repository, that is Jeff Bezos. So I'll copy. I will come to update repository and I will paste this also. Okay, Jeff Bezos pasted. Okay, now I will save it, and if I send it, what status code I will get? Tell me, guys. Are you listening? Are you all alive? Like जिंदा हो ना? सुन रहे हो? 201. Are you sure, Rizwan? If I click on save button, I am just updating one repository. I have not given any body. I've just if I just click on save and if I click on send button, what status I will get? 400, 403, 200. Let's see. Let's see. 402. 400 bad request.
request. Okay, why? Because I have not given body. I'm updating something and I've not given body. 201, 201. When we will get 201? When we are creating something. See, when we are creating something, we will get 201. Okay, and if we are updating something and we have not given body, then something wrong with body, then we will get 400 bad request. Okay, so obviously I have to update something, so I have to give some body, I have to give some output over there. So I will select, click on body, I will select raw, I will select, and then I will select JSON in JSON format. Now which what you want to update, you just write. Suppose I want to update, um, I want to update description, or yes, description I want to be. It should be in double quotes. It should be in double quotes. Description according to this format we have to write. Okay. Suppose I uh, founder of Amazon. Now I want to write it as boss of Amazon. Okay. I'll comma, and then private. I want to make it as private. As of now, it is public. See, you can see here, it is public. Founder of Amazon, public, Jeff Bezos. Now, description, boss of Amazon. If I want to make it as private, then I have to select one boolean values that is true. Okay, so see how I did. Many of you are facing and doing the same issue, same problem, same thing. And why? How I did? I have just created one object. Okay, how to create an object? With the help of these two curly braces, we can create an object. I have created one object, and under that object I have given whatever the things which are needed to, whatever the things which you want to update. Suppose I don't want to update name, I just want to update name will be Jeff Bezos only, but I want to change the description, I want to update the description. So I will select description part only. Have I written name over here? No, it is not needed because I don't want to update this. That's why I have not written name. I just want to update the description, so that's why only description I am giving. Okay, description, it will change from founder of Amazon to boss of Amazon, and previously it was public because I have given value for private false. Now I'm giving true, so that public will converted into private. Okay, it will convert into private. Okay, now if I click on save and if I click on send button, let's see, 404 not found. Okay, why it is happening? No, correct. Okay, yeah, correct. Token not selected. As I said before, whenever we are getting 404 not found status code, it means there will be something wrong with URL, or maybe we have not selected token. Here, bearer token. Now, if I click on save and send button, okay, what I will get? 200. Okay, super. Very glad to see that many of you are getting the concept and you are able to answer. Correct. Okay. Correct. Correct. We have to give permission to from GitHub to update. Exactly. That's why we have to check whether the token is selected or not. Correct. Very good. So we are getting 200. Okay, now if you want to see the magic, you come to your repository. As of now, it is Jeff Bezos, founder of Amazon public. Now what I have updated, I have updated the description and I have updated the privacy. Now it has to turn into public private, and this has to convert into boss of Amazon. Let's see it is converting or not. See, boss of Amazon private. Correct. Got it, guys? Easy, no? Easy. Easy peasy. Okay, done. So that's how you can update one repository. I have created one repository. I have fetched the created repository. Okay, now if I want to update something, I can update it by using this patch operation, because a developer in API document, developer has mentioned
patch operation to update repository. If they have mentioned put, then we have to use put over here. Just because they have mentioned patch, then we are using patch over here. Simple. Okay. Now again, one more thing I want to tell you, if I want to, it is updated. Okay, if I want to fetch whether it is updated or not. So how will fetch updated repository, fetch updated repo. Okay, get operation, and the URL we are using is https colon double forward slash api.github, this one. Okay, no, not this one. Yes, correct, this one. And save it, and authorization bearer token, and then save it and send it. Okay, then we can get again 200. Okay, now it is updated. So now you can see the result, that it will show previously here in fetch created repo what it was showing. See, private was false, and description was founder of Amazon. Now I have fetched the updated repo. Now private is true, okay, and description is boss of Amazon. Now you're understanding why we are using this get method. Now did you understand? Because whenever we are not able to see the UI of an application, we are doing API testing. So we are creating something or adding something with the help of post method. Okay, and we are using get method is very important to check whether created whether the repository is created or not. To fetch it, we are using get method. So here now you can see, like suppose I have created one repository. If I want to do some updation, I can do with the help of put and patch method. Now I have to check whether that thing is updated or not. So again I have used get method, and here I can see the description is now boss of Amazon. It is changed to boss of Amazon, and the private value is now true. Are you understanding now what API testing is? Are you understanding it, how we are doing it, and what exactly it is? How to explain? Are you understanding? Tell me honestly. In theory maybe we are not able to relate some things and we are getting some doubts, but we if we start working on practicals, then we understand why exactly we have to do API testing, and when we have to do API testing, what is API testing, and how we are doing it, API testing. These four questions are very important, that what is API testing, and when we have to do API testing, why we are doing API testing, and how we have to do API testing. And we are clear with concepts of theory, and then we are doing practicals, then we can relate things to each other. Okay, so that's why both are very important, theory plus practicals. Okay, done. Okay, now I want to delete this repository. Now I want to delete this repository. How I am able to delete this repository? With the help of again delete method, obviously. So I will add one more request. I will add one more request, and I will name this request as delete repos, delete repo, delete repository. Okay, then get. Okay, I will select delete here. Okay, and then again I will give the URL. Okay, just suppose I have given this, I know the URL, so we'll write it down without wasting time. API GitHub, and this API dot this one. Let me check once for the endpoints. Delete a repository. How to find a repository for delete a repository? Simple, in REST API. Scroll down a little. Again, click on repository. Here you can find delete a repository. For delete a repository, these are the endpoints. Slash repo slash owner slash repo. See, slash repo slash owner slash repo, same thing. Okay. And one more thing, guys. If you suppose if you have updated a repository and you have updated name also. Okay, please listen it very carefully. Suppose you have updated your repository and you have updated your name also. So if you try to fetch the updated repo, it will not come.
Why it will not come? Because you are giving name of previous repository. It will give, maybe it will give result of your previous repository that you have created. If you want to fetch your updated repository, then you have to change the repository name. Are you getting it, what I'm trying to say? Maybe if you while updating the repository, here I have updated only description and private thing. Okay, maybe you want also want to update द नेम ऑफ दिस repository. जैसे इसका नेम अभी क्या जेफ बेजोस है, इसको एलॉन मस्क आपको करना है, ठीक है, कि बॉस चेंज कर दिया एलॉन मस्क को और डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया एलॉन मस्क और यहाँ पे लिख दिया कुछ समथिंग समथिंग एल्स, ठीक है। तो अगर आपको अगर फेच करोगे ना, तो आपको यहाँ पे रेपोजिटरी नेम अगर आप जेफ बेजोस डाले हो, तो वो जो पहले रिपोजिटरी क्रिएटेड होगा उसका पूरा रिजल्ट लाके फेच करेगा। लेकिन अगर अब आप एलॉन मस्क डालोगे, तभी आपकी वो अपडेटेड जो रिपोजिटरी रहेगी उसका रिजल्ट लाके देगा, ठीक है। और अगर आपको डिलीट करना हो, जैसे आपने 2 रिपोजिटरी की है, तो 2 रिपोजिटरी क्रिएट हुई है, तो मे भी ऐसा होगा कि बस वो अपडेट कर देगा और फिर आपको बस वो जो डिलीट वाली रिपोजिटरी होगी उसका नाम देना पड़ेगा। जैसे आपको आपने नेम अपडेट कर दिया था जेफ बेजोस से एलॉन मस्क, तो अगर आपको उस रिपोजिटरी को डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको एलॉन मस्क देना पड़ेगा। गेटिंग इट गाइस, गेटिंग इट? या एग्जैक्टली आकाश, ओके, गेटिंग इट? So here I want to delete this repository. Here I want to delete this repository. Okay, so I have given URL, proper URL I have given, and then I have given proper endpoints. Okay, then I will save it. I will check for bearer token again. Then I will save it, and then if I send it, see what I will, what status code I will get. 403 forbidden. What is this status code? What is this status code? It is very important. This is multiple asked questions by an interviewer, that what is 403 status code. Okay, 403 403 forbidden, 403 forbidden. It stands for कि आपने एक टोकन बनाया है, ठीक है, आपने एक टोकन जनरेट किया है, लेकिन जो आप ऑप्शन, आप जो ऑपरेशंस सेलेक्ट करना चाहते हो, जो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, उसके लिए वो टोकन केपेबल नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि जैसे हमने एक टोकन लिया है रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए, लेकिन गिटहब एपीआई डॉक्यूमेंट में, मतलब जो पार्टिकुलर जो डेवलपर, जो मतलब एक एप्लीकेशन है जो एक्सेस करवा रहा है अपने 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 एप्लीकेशन को, एक कोई पर्सन एक्सेस करवा रहा है, तो वो ऐसा किया है कि अगर आपको रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, अपडेट करनी है, उसका एक सेपरेट टोकन है, और आपको रिपोजिटरी डिलीट करनी है, उसका एक सेपरेट टोकन है। दोनों को साथ में नहीं उसने ज्वाइंट किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये रिपोजिटरी जनरली ऐसे डिलीट नहीं की जाती है जब तक प्रोजेक्ट खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए वो नहीं चाह रहा था कि वो डिलीट रिपोजिटरी उसी वाले में टोकन में वो मेंशन करे। तो अगर आपको अगर डिलीट रिपोजिटरी करना है, तो आपको अलग से एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा, जहां पे आपको डिलीट रिपोजिटरी का भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज तो फॉरबिडन तभी आता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉरबिडन स्टेटस कोड तभी आता है जब कोई आप ऑपरेशन करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे भी आपको, आप ऑथराइज हो, लेकिन जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो उसके लिए आप ऑथराइज नहीं हो, ठीक है। दैट यू आर that you are authorized to access the application, but you're not approved to perform that particular action. समझ में आई बात? गॉट टू नो, ठीक है, दैट यू आर ऑथराइज्ड टू एक्सेस द एप्लीकेशन, बट यू आर नॉट अप्रूव टू परफॉर्म दैट पार्टिकुलर एक्शन, ठीक है। समझेंगे इस चीज को, ठीक है। देखो रेपोजिटरीज में वापस, अब मेरे को वापस एक टोकन जनरेट करना होगा, ठीक है, वापस से टोकन एक जनरेट करना होगा, तो मैं कैसे करूंगा? ऑब्वियसली आई विल गो हियर इन अकाउंट सेटिंग्स, आई विल क्लिक ऑन सेटिंग्स, I will click on settings. See very carefully, to generate one token. Again, I'm just repeating it. Click on settings, we will get this page. Okay, then we have to scroll down a little and we have to click on developer settings. Okay, then we have to click on personal access tokens, and then we have to click on tokens classic. Okay, and from here we can generate new token. Okay, we have to select generate new token, and then we have to select generate new token classic.
Okay, then we have to give our password. Okay, and then we have to give a name for that particular token. Suppose I have given Jeff Bezos, Jeff Bezos delete repo. Okay, Jeff Bezos delete repo expiration. I will select this checkbox to create, मतलब एक ऐसा टोकन मैं बना रहा हूँ जिससे रेपोजिटरी क्रिएट भी हो जाए, अपडेट भी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे देखोगे डिलीट पैकेजेस। ठीक है, डिलीट पैकेजेस के लिए नहीं, हमको डिलीट नहीं करना है, डिलीट रेपो इसके लिए अलग से है। ठीक है, तो ये चेकबॉक्स में सेलेक्ट करूंगा तो अब मैंने रेपोजिटरी क्रिएट करने के लिए भी मेरे पास टोकन वो अप्रूव हो जाएगा, और अगर मेरे को रेपोजिटरी डिलीट करनी है तो उसके लिए भी मेरे पास एक्सेस है। ठीक है, तो अब मैं टोकन जनरेट करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया जनरेट टोकन पे, ये टोकन जनरेट हो गया। इसको क्विकली मैं कॉपी करता हूं और इसको पेस्ट कर लेता हूं अपने नोटपैड पे। ठीक है, क्यों मैं पेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये तुरंत गायब हो जाएगा। अभी अगर मैं रिफ्रेश बटन दबाता हूं तो देखना ये टोकन नहीं रहेगा। ठीक है, वो आप उसको अब आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, इसलिए उसको क्विकली आप मैं कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अब मैं जाऊंगा और फिर मैं ऑथराइजेशन पे गया, फिर बियरर टोकन सेलेक्ट नहीं होगा तो सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे टोकन वैल्यू है इसको रिमूव किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो टोकन था उसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, और लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो और कभी कभी आप लोग 404 नॉट फाउंड रिक्वेस्ट इसलिए भी पा सकते हो, और अनऑथराइज्ड 401 हो सकता है कि आपने जो टोकन डाला हो वो करेक्ट नहीं हो, मतलब आपने सही से कॉपी नहीं किया। हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्पेस आपने कर लिया, यहाँ पे भी अगर स्पेस होगा तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस कैरी किया हो, तो उस स्पेस को आप हटाओ आप, और करेक्टली देखो कि एकदम एकदम स्मूथली, एकदम क्लियरली, उस नीटली उसको टोकन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ से कॉपी करके नीटली यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हो सकता है कभी कभी आप लोग 401 404, कुछ लोग मेरे को बताया टेक्स्ट की कॉल की कि सर ये ऐसे क्यों आ रहा है, स्क्रीनशॉट भी दिखा है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने टोकन सही से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट नहीं किया हो, और बियर टोकन सेलेक्ट नहीं किया हो, बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत से सही से कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, एंटर दबाया। अब मेरा जो अपडेटेड टोकन है, ठीक है, जो मैंने यहाँ से ये कॉपी किया हूँ K3, फिर से एक बार पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब टोकन मेरा डल गया। ठीक है, मेरा टोकन सिलेक्टेड है, बॉडी तो डालना है नहीं क्योंकि मैं डिलीट कर रहा हूँ रेपोजिटरी को, तो ऑब्वियसली बॉडी बॉडी की क्या नीड है। ठीक है, अपडेट और पोस्ट जब भी हमको क्रिएट करना हो या फिर अपडेट करना हो तब हमको बॉडी की नीड होती है। अगर फेच करना हो या फिर डिलीट करना है तब हमको बॉडी की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो सब कुछ है, डिलीट, रिक्वेस्ट नेम, URL, एंड पॉइंट्स। ठीक है, ऑथराइजेशन अपडेटेड। नाउ इफ आई क्लिक ऑन सेव and if I click on send button, then I will get one status code that is 204 no content. 204 no content. Okay, what does it mean? What does it mean? No content. What does it mean? It means पहली बात तो अगर 200 के लाइन में है तो वो जितने भी 200 के लाइन में रहते हैं कोड्स, स्टेटस कोड्स, वो सारे ही सक्सेसफुल कोड्स होते हैं कि जो भी आप ऑपरेशन कर रहे थे वो ऑपरेशन हो गया। जैसे 201 मिला, मतलब कि मैंने कोई क्रिएट करना चाहा, वो चीज क्रिएट हो गई तो मेरे को 201 मिला। 200 मिला, मतलब अगर हम कोई चीज अपडेट करना चाह रहे थे वो चीज अपडेट हो गई तो भी 200, या फिर हम कोई चीज फेच करना चाह रहे थे तो वो चीज फेच हो गई तो भी 200। वैसे ही 204 अगर मिलता है, इट मींस कि जो चीज हम अगर डिलीट करना चाह रहे थे वो सक्सेसफुली वो चीज एक्शन हो गया है, लेकिन वो एक्शन हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमने कोई रेपोजिटरी क्रिएट की। ठीक है, सपोज हमने कोई यहाँ पे अभी वो है। ठीक है, चलो ये देखो, सपोज हमने कोई रेपोजिटरी क्रिएट की। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा 201 क्रिएटेड। ठीक है, 201 क्रिएटेड, और उसमें हमको रेस्पॉन्स बॉडी में मिला है कि ये देखो, ये हमने एक रिक्वेस्ट भेजी थी सर्वर को, सर्वर ने हमको ये रेस्पॉन्स भेजा, और रेस्पॉन्स में ये बॉडी पूरी प्रेजेंट है। ठीक है, ये बॉडी को हम देख सकते हैं, ये सारी बॉडी हम देख सकते हैं कि यहाँ ये रेस्पॉन्स बॉडी में मिला है। ठीक है, अब हम उसी चीज को फेच किए तो भी हम देख सकते हैं उस पूरी बॉडी को। ठीक है, जो हमको रेस्पॉन्स में मिली, बेसिकली हम वो चीज फेच कर रहे हैं ना, कि जो हम क्रिएट किए हैं वो हम उस चीज को फेच कर रहे हैं कि क्रिएट हुई कि नहीं। तो हमको ये रेस्पॉन्स बॉडी में सारा कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा जो सर्वर से मिला है। अब हमने कोई चीज अपडेट किया, फिर से सेंड भेजा, तो हम बॉडी में देख सकते हैं कि वो चीज अपडेट हुई है कि नहीं। वैसे ही हम फेच करके भी देख सकते हैं कि वो चीज अपडेट हुई है कि नहीं। ठीक है,
अब हम कोई चीज डिलीट कर रहे हैं तो सर्वर को एक रिक्वेस्ट गई है डिलीट करने की, तो सर्वर ने वो चीज डिलीट कर दी, तो रेस्पॉन्स बॉडी में थोड़ी प्रेजेंट रहेगी वो चीज, क्योंकि वो चीज तो डिलीट हो गई है। तो जब भी कोई 204 नो कंटेंट स्टेटस कोड आता है, इट मींस द operation that we are was willing to do, it was successful, but we can't see that. It means no content is present because the whole content is got deleted because we were uh, doing that kind of operation. We are doing delete operation, that's why that particular content is deleted, so that's why it is not present in response body. Getting it? Got it guys? Sab mein aaya? Got it? Performed performed action is successful. Performed action is successful, but content, basically performant action is successful, it is more than enough. But again, performant action is successful, but content is not there, because content is not there, but content is not there, uh, because but content is not there because